हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव विद रेस्पेक्ट टू अस दैट द सोडियम लाइन at 589.0 nanometer is observed at 589.6 nanometer, 100 kilometer per second, 306 kilometer per second, 0 kilometer per second, 225 kilometer per second. Question number 2. Two slits are made 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away and the light of 500 nanometer is used. What should be the width of each slit? B. To obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern. 1 mm, 0.1 mm, 2 mm, 0.2 mm. Question number 3. Light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 254 centimeter is 1.45 into 10 to the power minus 7 radian, 2.9 into 10 to the power minus 7 radian, 2.25 into 10 to the power minus 7 radian, 1.05 into 10 to the power minus 7 radian. Question number 4. For what distance ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide and wavelength is 500 nanometer, 5 meter, 10 meter, 18 meter, 2.5 meter. Solution. Question number 1. What speed should a galaxy move with respect to us that the sodium line at 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer? 100 km per second, 306 km per second, 0 km per second and 225 km per second. तो वेवलेंथ है that is lambda is equal to 589 nanometer. Observed wavelength lambda 0 is 589 nanometer. Change in wavelength 589.6 minus 589 is equal to 0.6 nanometer. Speed of light in vacuum C 3 into 10 to the power 8 meter per second or 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. Speed of galaxy is v एक्सल. अगर इसको एक्सल से डिनोट करें या रेडियल, v रेडियल. ये हमें कैलकुलेट करना है. द डॉपलर इफेक्ट according to Doppler effect, delta lambda by lambda is equal to v radial divided by c. तो v रेडियल होगा c इंटू डेल्टा लैम्डा बाई डेल्टा बाई लैम्डा. c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, डेल्टा 0.6 नैनोमीटर और 589 नैनोमीटर. डेल्टा की वैल्यू दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 589
किलोमीटर पर सेकेंड, और 188 इंटू 10⁻², by 589 किलोमीटर पर सेकेंड, 188 1800 589 3 33 decimal 0 0 and 0, 5 35 4 29 5 5 3 0 और 6, 3.056 into 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड, और 3.06 into 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड से 306 किलोमीटर पर सेकेंड। जो गैलेक्सी की स्पीड होगी वो होगी 306 किलोमीटर पर सेकेंड। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, two slits are made 1 mm apart and screen is placed 1 meter away and light of 500 nanometer is used. What should be the width of each slit be to obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern? 1 mm, 0.1 mm, 2 mm, 0.2 mm. Double slit experiment. This is screen और दो स्लिट्स, इनके बीच की जो स्पेसिंग है स्मॉल डी, स्लिट्स और डी, कैपिटल डी, और सपोज लैम्डा लाइट इज यूज्ड। 10 मैक्स width of maxima fringe फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। width of one fringe, width of 10 maxima fringe, ten d lambda by small d। अब इसका अगर एक width of a slit is a, और ये सिंगल स्लिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसका width a, एक सिंगल स्लिट की स्क्रीन, ये इसकी सेंट्रल लाइन, और फर्स्ट डिफ्रैक्शन एंगल थीटा पर अपर साइड में फर्स्ट मिनिमा, और थीटा एंगल पर लोअर साइड में फर्स्ट मिनिमा, जो width of central maxima, this is width of x,
width of central maxima. For first minima, a sin theta should be equal to lambda. अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो ए थीटा इज लैम्डा, थीटा इज लैम्डा बाई ए, टू थीटा इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई ए, और टू थीटा इज एक्स बाई डी इज इक्वल टू टू लैम्डा बाई ए. एक्स विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज टू लैम्डा डी बाई ए. This 2 lambda d by a is equal to this 10 maximum fringe is equal to 2 lambda d by a. 2 lambda d by a is equal to 10 d lambda by a. d lambda से ये क्रॉस हो जाएंगे, दिस इज d. a is equal to 2d by 10 is equal to d by 5, और जो स्पेसिंग है दोनों स्लिट्स के बीच की दैट इज 1 mm बाई 5 इज इक्वल टू 0.2 mm. तो विड्थ होगी स्लिट की वो होगी 0.2 mm. डी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. ए लाइट वेव 6000 एंगस्ट्रॉम is coming from a star. The limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 254 centimeter is 1.45 into 10 to the power minus 7 radian, 2.9 into 10 to the power minus 7 radian, 2.25 into 10 to the power minus 7 radian, 1.05 into 10 to the power minus 7 radian. Wavelength lambda is 6000 एंगस्ट्रोम. एक एंगस्ट्रोम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, दिस इज मीटर. 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव 2a is equal to 254 सेंटीमीटर और 2.54 मीटर. तो रेडियस a is equal to 2.45 by 2, 1.27 meter. Limit of resolution, limit of resolution d theta, इसकी वैल्यू होती है 0.61 लैम्डा बाई ए. 0.61 लैम्डा की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई ए की वैल्यू 1.27. 3.66 डिवाइड बाई 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेडियन. 366 127 2 254 211 08 401 0 फिर 8. 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेडियन और
इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 2.9 into 10 to the power minus 7 radian. 2.9 into 10 to the power minus 7 radian. B is correct option. Question number 4. For what distance is ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide and wavelength is 500 nanometer, 5 meter, 10 meter, 18 meter, 2.5 meter. Width of aperture, width of aperture A is equal to 3 mm or 3 into 10 to the power minus 3 meter. Wavelength used, lambda is 500 nanometer or 500 10 to the power minus 9 meter or 5 into 10 to the power minus 7 meter. For good approximation, the distance would be फ्रेस्नेल डिस्टेंस. अगर इसको हम डी एफ से डिनोट करें, उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर बाई लैम्डा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, 9 इंटू 10 बाई 5 मीटर, 18 मीटर. तो गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस है दैट इज 18 मीटर. सी इज करेक्ट ऑप्शन.